ठीक है. So anybody can start. I mean, we just want to see that I mean, it shouldn't be the basic presentation, not just name or your age or something like that. So we want to be some, like, you know, we want to add some creativity in that. So si je vous demande à vous présenter, let's say if you're at A2 level, you can be, when you can talk some basic French, but let's just think that we have to improve our level, just not telling the name, not just the age, name, profession, nationality, or what you like, dislike. इससे थोड़ा हटके, ठीक है? We will be, I mean, practicing something like that, or maybe on peut parler sur un sujet général. ठीक है, so qui va commencer? Est-ce que quelqu'un peut commencer à présenter? Oui. Spoken French करेंगे तो कुछ तो बोलना पड़ेगा. Moi. Okay, oui, Dibya, oui, vas-y. So if I ask you, parlez-moi de vous, ठीक है? Talk to me about you. Parlez-moi de vous. So एक बार, I mean, we can just see. Suppose je vous demande cette question, parlez-moi de vous. Voilà. Comment vous appelez-vous? Quel âge avez-vous? Où habitez-vous? Etc. Okay. Now, this is what you answer. I mean, to these questions, you are just answering by saying, je m'appelle, etc. J'ai 25 ans, j'habite à Paris, je travaille comme enseignante. Okay, I mean, okay, this is a very small, basic introduction. It is not B1 level, or I mean, it is not even A2, it is A1. Okay, but we have to increase our level. Okay, il faut être créatif. Donc, il faut ajouter des informations. And if I ask you what's your name, you will say, je m'appelle Thomas, etc. J'ai 30 ans, etc. So this is just a basic introduction. But if I want you to add something in this, if I want to ask you, just talk to me about yourself. So can you just talk about anything about yourself in detail? So that's what we are looking. Okay, Dibya, vas-y. Je m'appelle Dibya. Hmm. J'aimerais travailler Hmm. dans dans un paysage étranger. Après, Dans un paysage étranger ou dans un pays étranger? dans un pays étranger. Oui. Ok. Dans un pays étranger. Hmm. Après, je complète mon étude français. Ok. Euh, So, tu dis, tu veux travailler au pays étranger après avoir complété mes études. After having completed, no? I would like will not be. That's fine. J'aimerais travailler. That is also okay. You are saying, I would like to work in a foreign country. है ना? After having completed my studies. You're saying that, right? Yeah. So, okay, so this is one thing. I mean, all of you can use this expression. Après avoir fait quelque chose. मतलब, après avoir plus the past participle of the verb. ये एक expression होता है. That, like Dibya, he said, I would like to work in a foreign country after having finished my studies. Or you can simply say after my studies. Après mes études. But après mes études, you are specifying that after having completed, once I complete my studies, then I would like to go to a foreign country and I would like to work there. Then we can use cette expression après avoir fait quelque chose. Donc, dans ce cas-là, Dibya, tu as dit, j'aimerais faire ou j'aimerais travailler dans un pays étranger
après avoir complété mes études. Donc you'll say après avoir complété has to be past participle. ठीक है? Oui. Après avoir complété. Donc il y a un accent ici. Un instant. Compléter mes études. It is visible. हाँ. है ना? So it has to be après, you have an accent grave here. Okay, après avoir complété mes études. है ना? After having. So it is a very good expression you all can learn, and you can include this in your introduction, or if any monologue, if you're appearing in an exam. After having done something. ठीक है? Après avoir complété quelque chose ou fait quelque chose. ठीक है? So if you'll add these sort of lines in your introduction, you definitely get some points. Okay. Okay, we continue. Je pense que un nouvel pays, je pense qu'un nouvel pays est toujours intéressant Oui. et amusant pour quelqu'un, non, pour quelqu'un So ou it is not required pour quelqu'un. It is understood. Je pense que qu'un nouveau pays, है ना? Je pense. In fact, you can add a word here. Je pense que déplacer, है ना? À un nouveau pays est toujours intéressant. And what you used one more adjective. Amusant. हाँ, so ये खत्म हो गया. Pour quelqu'un की कोई जरूरत नहीं है. It is understood कि it is interesting for everybody, you know. Not everybody, but मतलब you are talking in general, right? Yeah, So je pense que déplacer, because you're saying I would like to work in a different country after my studies, है ना? So फिर आप क्या कर रहे हो? You are migrating from one country to another. For that we use a verb here, déplacer, or we can also say immigrer. ठीक है? Synonyms होते हैं. But हमने यहाँ पे déplacer use किया. Je pense que déplacer à un nouveau pays est toujours intéressant et amusant. So it is interesting and amusing and enjoyable for anybody or everybody. Okay. So you do not have to specify. Okay. Déplacer has an accent aigu. Okay. Déplacer. So use these sort of verbs, good vocabulary. You're also looking for some good vocabulary in your spoken French. Okay. Déplacer, ça veut dire to move from one place to another. If you want to use any synonym, then it will be immigrer. And always look for synonyms for every word. है ना? Okay, je pense. Okay, vas-y. J'aime regarder le football. Allô? J'aime regarder. So Regarder again j'aime regarder le football. Oui. Alors, je crois que Angleterre est la parfaite destination pour moi. अच्छा ठीक है. फ्रेंच अलग होती है, इंग्लिश अलग होती है. एवरीबडी नोज, है ना? जैसे आपने बोला, ओके, tu m'as dit je pense qu'Angleterre est la parfaite destination, ऐसा कुछ आपने बोला है ना? Je pense que l'Angleterre, qu'Angleterre नहीं होगा, country के साथ we have to put this article. que l'Angleterre est parfaite destination, आपने कुछ ऐसे बोला है ना? ठीक है. फ्रेंच
आगे क्या बोला था? parfait destination Pour moi. pour moi. So we already know everybody that French में ना थोड़ा चीजें उल्टी हो जाती हैं, है ना? जैसे this is a French book. In English it is this is a French book, but in French it is this is the book of French. ऐसे बोलते हैं ना. French book English में होता है, French में होता है book of French, le livre de français, है ना? Water bottle को कैसे बोलते हैं? What is water bottle in French? La bouteille d'eau. La bouteille d'eau. Très bien. Une bouteille d'eau, la bouteille d'eau. Donc वो उल्टा हो गया ना. Water, bottle of water हो गया, है ना? Lunch box. Cahier book. No, No. la boîte. Boîte. La boîte. La boîte de repas. Dijon. Une boîte de repas, une boîte à repas, है ना? Une boîte de repas. So the box of lunch ऐसे करके होता उल्टा है ना? Similarly, when you are saying l'Angleterre est parfaite destination, it is not correct. L'Angleterre est une destination parfaite. Adjective, you have to decide whether it has to come before the noun or it has to come after the noun. Donc, il faut apprendre ces règles, comment utiliser les adjectifs avant ou après le nom. OK? Donc, dans ce cas-là, l'Angleterre est parfaite destination. Non, l'Angleterre est une destination. Always remember, all of you, मैं आपको एक चीज ट्रिक बता रही हूँ. ट्रिक नहीं है, मतलब it is a rule. French में whenever you are writing any noun, जब भी आप कोई नाउन लिख रहे हो, डेस्टिनेशन क्या है? और एक चीज ये भी है, आई डोंट नो, आई थिंक यू ऑल आर A2 लेवल के आप हो सारे. तो आपको ना ये नॉलेज होनी चाहिए. थोड़ी इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी उसके लिए. मतलब प्रोनाउंस, सब्जेक्ट प्रोनाउंस, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स और इंटेरोगेशन, ऐसे वर्ड्स इंग्लिश में भी पढ़ने पड़ेंगे. You need to know the definition of an adverb. You need to know the definition of a noun. You need to know the definition of a verb. क्योंकि when it helps us in, you know, making the sentence correct. So when I'm saying, you always have to add the article before every noun you use. Every noun. Every noun माने every noun. For example, in this case, destination, ça c'est le nom. It's a noun. है ना? Feminine है ये. TION हमने किया था ना? They are all feminine. So you have to either add une or you have to use la. Depends on the context how you are using. So l'Angleterre est une destination parfaite. ठीक है? So you will say l'Angleterre est une destination parfaite pour moi. ठीक है? उल्टा हो जाएगा. और adjective has to come after this and you have to add e because destination c'est féminin singulier. Ok, il faut toujours faire des accords. Ok, next. I mean, continue. Après. Is this clear, Divya, to you? Yes. I like when I'm talking, I forget some of the rules that I know, like, but. अच्छा, okay. So यही है spoken French में, तो यही है ना कि बोलना is a challenge, right? अभी बोलना is a challenge तभी overcome कर पाएंगे जब आपकी टीचर या जो आपके जिससे भी गाइड रहे हैं या रहे हैं जो, when that mentor or the coach has to push you to write also. So when you will write at least once a week, twice, 2 assignments of writing if you do, then your creativity, thinking capacity, it increases day by day, week by week. And what you say, regular assessment or checking, ये सब जैसे हम करते हैं क्लास में, तो वो रहना चाहिए. Okay, continue. Je pense que je serai
Uru. ईरू नहीं है, कल ही हमने पढ़ा। Je serai content. ठीक Happy है, always. वो वाला वर्ड पढ़ो जो आप जो वो वाला बोलो जो आप अभी बोलना चाह रहे थे। Heureux. कल ही पढ़ा है ना ये। अह Heureux. I told you the lip Yeah. shape also. EU Yeah. नहीं है ना, EU is है ना, Heureux. Je ठीक है। sais, Okay, yes, what did you say? je pense que je serai content Hmm. dans mon temps libre Hmm. et yeah, je serai Ok, je- c'est tout. Merci beaucoup. Oui, c'est bien. So, with you, we have learned one expression après avoir plus participe passé. ठीक है? So, I urge everybody to please use this expression in your spoken French or even written French also. You can use. Okay, anybody else qui voudrait parler? Any topic, I mean, anything you want to speak on? This, I wanted to keep an interactive session. अगर मैं सिर्फ पढ़ाती रहूंगी तो it will be very monotonous. Nobody gets a chance to speak. I do not have any set syllabus for today. बोलो. May I, ma'am? Pooja. Yes, please. So, we tell me about yourself. Parlez-moi de vous. Je vais commencer par me présenter. Je vais Je commencer, m'appelle oui. Hmm. je m'appelle Pooja. Je suis originaire de Kurukshetra. Je suis originaire Originaire de Kurukshetra. Oui, J'ai 40 ans. oui. Je suis femme au foyer et Je suis femme. We never say Femme. as a femme or everybody. It is always a femme. A je femme. suis femme au foyer Hmm. et aussi chocolatière. Chocolatier. Chocolatière. Oui. Chocolatière, parce que tu es féminin. Donc, on dit chocolatière. Oui. Je Ok. suis une personne très sociable, curieuse. J'aime Curieuse. curieuse et enthousiaste. Curieuse. 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 Curieuse et enthousiaste. 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 Enthusiast. When you have these long words, everybody, whosoever is facing a challenge in reading a long word or speaking a long word, just break that word into 2 or 3 syllables. ठीक है? O, tu, H silent हो गया तो tu. Z, S single S, I told you it is the sound. So Z, I को E बोलते हैं ना. Z, ast, enthusiaste. ठीक है? Je suis enthousiaste. Ok, oui. J'aime rencontrer des nouvelles personnes et J'aime échanger. rencontrer. Infinitive आएगा ना? Rencontrer de nouvelles personnes. De nouvelles. When the adjective is before the noun, plural form, des becomes de. Or it should also reflect in your spoken de, not they. De nouvelles personnes. Et échanger sur des sujets variés. Ok, pardon, j'aime rencontrer de nouvelles personnes et Échanger. ok. It's like exchange. Échanger quoi, pardon?
exchange what? D'échanger sur des sujets Okay. on different subjects. Like, Donc, on peut tout simplement, tu peux dire, j'aime rencontrer de nouvelles personnes et d'échanger des idées. Exchanging the ideas, c'est tout, non? Ideas can be on any subject, any topic, anything. So, échanger des idées. D'échanger. So, everybody, one thing also. See, when you're introducing two verbs, like I like to dance and to sing, है ना? So, you see, जैसे इन्होंने बोला, j'aime rencontrer de nouvelles personnes. I love to meet new people and to exchange ideas with them. So to exchange, you always have to add this D again after ET. ये जरूरी है अगर आप ET नहीं, क्योंकि it is important. J'aime rencontrer de nouvelles personnes et d'échanger des idées. ठीक है? Okay, we next. j'aime découvrir de nouveaux endroits. हाँ, तो जैसे कल अभी हमने 2 दिन में वो किया है, साउंड्स प्रैक्टिस किए हैं. So could you able to apply those sounds in your जो अब आपका इंट्रोडक्शन है? Like what? हाँ, लास्ट लाइन क्या बोली आपने, दोबारा बोलो. वी वैसी उनको J'aime, हाँ j'aime découvrir हाँ, तो अभी क्या है, इसको कैसे बोलेंगे? ओके, नेक्स्ट découvrir आगे. de nouveaux endroits. So how would you say this? ये क्या है? What is this? Nouveau. OU का sound? You. Nouveau. AU का sound? EAU का sound? We did it, ना? You. नहीं. EAU is O, no? Yes. J'aime découvrir de nouveaux endroits. Liaison भी करना है. De nouveaux endroits. ठीक है? J'aime découvrir de nouveaux endroits. ठीक है? Okay, d'accord, merci. Très bien. So, but just again, so let's say you write your introduction on a page, add some more elements in your introduction, then try to read it the French way. The French way, mane, the sounds which we have learned, try to read them in that particular sound. Okay, using all these nasal sounds, all these combinations, liaison, etc. D'accord. Quelqu'un veut demander quelque chose? अगर आप लोग बात नहीं करेंगे तो फिर कैसे? Moi, est-ce Ok, que je peux me présenter? Oui, vas-y. Moi, c'est Shelley Grover. J'habite à Delhi. J'ai 35 ans. Je suis mariée et j'ai 2 filles. Il y a longtemps que j'ai fait mes études. C'est environ 15 ans. Mais je veux continuer avec mes études parce que je veux non seulement améliorer mon niveau, mais aussi pour parler cette langue couramment. Très bien. Prenant ces cours est un vrai plaisir. Pardon? Prenant ces cours est Prendre. Taking, na? Prenant ces cours est un vrai plaisir. Not prenant. Prendre un cours. Okay. Taking, in this case, it will be like, you know, faire du shopping, c'est un vrai plaisir. Okay. है ना?
So, prendre un cours ou suivre une formation. Okay, everybody. So, मतलब ये थोड़ी grammatical और वैसे पढ़ाई वाली class भी हो रही है, but doesn't matter. Prendre un cours, ये automatic filter है, मुझ में वो आ जाता है. So, prendre un cours, synonym is also suivre une formation. It is not always. So, you know what we say that अगर आप A1 में हैं, तो A1 की vocabulary A2 में चल जाती है, acceptable है, ठीक है. But A2 की vocabulary B1 में c'est pas plutôt acceptable parce que B1 niveau B1 c'est plutôt élevé. Alors pour passer l'examen B1, il nous faut de posséder un vocabulaire riche, un vocabulaire élevé. So prendre un cours, ये A2 expression है. Suivre une formation is your B1 expression, meaning is same for both. To take a class or following any course is suivre une formation est un vrai plaisir. What did you say? मैं भूल गई. Vrai plaisir. हाँ, ठीक है. Okay. J'aime profiter de la nature. C'est pourquoi je marche quotidiennement pour 20 minutes. Et Je selon marche moi, नहीं, je me promène. In this case, you cannot Je me use promène. marche. okay. Because it is a hobby you are doing, right? Man, you're taking a walk. Il y a une différence quand on utilise marcher et se promener. ठीक है, जो आपने बोला है D'accord. वहां पे se promener आएगा. ठीक है. D'accord, madame. हाँ. Et selon moi, c'est une bonne habitude. En plus, j'aime faire du shopping. Cela me plaît beaucoup. Le Ça me week-end, plaît beaucoup. ये मैं ça आप me- लोगों को बता देती हूँ. There are two expressions, sa and cela. ठीक है. Both means this or that also. Depends on the context आप कैसे use कर रहे हैं. तो जो सा होता है, सा से प्लूटो ओरल, सला से प्लूटो écrit. सा हम स्पीकिंग में यूज करते हैं. hey, ça va, ça, de quoi ça, okay? Ça c'est oral, but cela is written French. तो आपने क्या बोला था अभी? cela me plaît beaucoup. हाँ, so instead Ça of me cela plaît. you can say ça me plaît beaucoup. Ça me Ça me plaît plaît beaucoup. Et le week-end, quand je suis libre, j'aime me socialiser. Socialiser. J'aime me socialiser. हाँ. So J'aime socialize me- itself means meeting new people. है ना? Or even meeting your friends, but it is socializing. ठीक है? Very good. Oui. Actuellement, j'enseigne dans une école qui est près de ma maison. J'enseigne. 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 हाँ. J'enseigne dans une école située près de ma maison. Oui. C'est une bonne expérience. Oui. C'est tout, madame. Ok. Oui. Très bien. Bravo. Oui. Bravo. Yeah. So you understood the difference between this marcher, se promener, prendre un cours. You can use this synonym, suivre une formation. है ना? अच्छा, you used one expression, non seulement, dash, 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 mais aussi. So this is actually B1 expression, those who are doing B1 or when you are doing learning B1, this is a very good expression. You can use it in your spoken or even writing. मतलब ये सब जो हम use कर रहे हैं ना, ये आपको ना extra points देता है. मतलब ये आपके सब उसमें add कर रहा है. मतलब giving you weightage in your spoken or written. ठीक है? Not only, how but do I also, get I it? not only love to paint, but also I love to draw. मतलब it's like that. Okay, qui parlait
पूजा. Yes, ma'am. Oui. Ma'am, how do I get to know कि like this is B1 level? Unless we join a class like course, or is there Obviously. any list? Like I've seen like there are different ये verbs for B1 ना? Different. Verbs. WORKS, works. नहीं verb ma'am, verb. Verbs. हाँ. हाँ. So like B1 level पे there are different list of verbs or नहीं नहीं, कोई लिस्ट नहीं होती है वर्ब की. मतलब मीन देयर इज नॉट अ फिक्स्ड लिस्ट और समथिंग. दैट इज व्हाट यू से ना, améliorer le niveau, c'est ça. तो अभी जैसे आप हिंदी में कुछ बोल रहे हो या इंग्लिश में बोल रहे हो, आई एम गोइंग टू द मार्केट, सो इट इज अ वेरी सिंपल सेंटेंस, बट इन B1 यू मे से इट इन अ डिफरेंट मैनर. तो वो वर्ब्स तो अलग हो ही जाएंगे ना. जैसे भी prendre en cours का मैंने सिनोनिम बताया, suivre une formation. Donc c'est le niveau élevé, saying the same thing in a different manner, है ना. got it. So B1 मतलब ये तो लेवल डिफाइंड है. दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दीज वर्ड्स A2 B1 B2, क्योंकि ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड चीजें हैं, है ना. सो आपको समझाने के लिए, सबको समझाने के लिए आई हैव टू यूज दीज टर्म्स. Yes, So yes, we are that I saying, got. है ना. So we are saying कि instead of just saying things in a simpler manner, A1 A2 तक आपको अच्छे पॉइंट्स मिल सकते हैं. मतलब मेरे पास ऐसे जब एनरोल करने के लिए पूछते हैं कि B1 के लिए, तो फिर वो बोलते हैं कि A2 में हमको स्पीकिंग में 20 मिले, 22 मिले, 21 मिले, कॉम्प्रिहेंशन में भी अच्छे से 20+ मिल जाते हैं A2 में. इफ यू आर स्पीकिंग दिस थिंग इन A2, दैट्स एक्सेप्टेबल. बट B1 में जब आप जाएंगे तो एक तो चेकिंग भी स्ट्रिक्ट होती है, प्लस दिस लैंग्वेज वी डू नॉट अप्रिशिएट. मतलब अप्रिशिएट नहीं, क्या बोलते हैं, मतलब इट्स नॉट B1 लेवल. बस ये है फर्क, है ना. वी ओके की va parler. Madame Japa, Oui, vas-y. Gunjan. oui. Je m'appelle Gunjan, j'ai 31 ans. J'ai 31 ans. Liaison. 31 ans, j'habite à Indore. Je suis ingénieur informatique, Oui. mais je suis mariée et j'ai un j'ai un petit enfant. ये पति नहीं है. So I mean don't take it otherwise, but वो पति वही मैं आपको बेसिकली, मेरा मोटिव जो था सिखाने का वही था कि हम को ज्यादा खींचते नहीं है. ठीक है. इज वेरी छोटा इन फ्रेंच. सो इट्स जियांपटी. अगर आप ई को खा भी जाओगे तो हम आपको C1 लेवल, हम आपको B2 मानेंगे. सो इट्स एक्चुअली दिस. सी अगर एक पता नहीं इंस्टाग्राम पे काफी कहीं पे पोस्ट होते हैं अगर, है ना, तो वो ऐसे होते हैं. दिस इज रिटन फ्रेंच एंड दिस इज स्पोकन फ्रेंच. j'ai un petit enfant, j'ai un petit enfant. ई तो बोलना ही. हाँ. सो petite, so you have to practice like this, है ना. और लेकिन अगर आपने पति तोहफा बोला तो when it is sounding weird to the examiner or a native French. ठीक है. सो ई, एवरीबॉडी टेक केयर कि जो भी ई बीच में आता है वर्ड के, सिमिलरली je me tue, है ना, petit. और appeler में तो बोलना पड़ रहा है थोड़ा सा, है ना. there are few words where you can avoid o का sound. ठीक है. ओके. वी राजी. J'ai un petit enfant. Mais après mon mariage, je prends le cours de français, de mathématiques et des sciences. de mathématiques. Mathématiques हाँ. et de sciences. Oui, ce que j'aime, c'est voyager du monde parce que je découvert des nouveaux endroits, des nouveaux
endroit. Parce que j'ai de la chance, या j'ai, sorry, not de la chance, parce que j'ai une occasion ou opportunité de découvrir de nouveaux endroits. मतलब जब मैं वर्ल्ड, मतलब जब मैं जगह घूमती हूँ तो मुझे एक मौका मिलता है नई जगह एक्सप्लोर करने का. So use this expression that j'ai une occasion de découvrir de nouveaux endroits quand je voyage, है ना? Oui. Parce que j'ai une occasion de découvrir हाँ, des nouveaux de nouveaux endroits. Again the same rule जो मैंने बताया था. endroits de la culture et de la nourriture. Okay. Je suis gourmand et j'aime faire la cuisine et essayer de nouveaux plats. Je suis Et gourmande. Très bien. quelquefois, quand je suis libre, je lis le journal pour me tenir au courant du monde. Je lis le journal pour me tenir au courant. Pour me tenir. Again here आप e को थोड़ा कम कर सकते हो. Pour me tenir au courant du monde. du monde. Monde नहीं, ठीक है? Monde. Monde. हाँ, Oui. très bien. Oui, bravo. J'aime apprendre le français parce que हाँ. m'intéresse beaucoup. Et aussi, j'ai réalisé que cette langue va être utile pour ma deuxième carrière. So, tu as dit, j'ai réalisé que cette langue va être utile pour Serait ma utile. In this case, we use conditional, but okay, I do not know which level you are at, but ये conditional लगता है इसमें. Serait utile pour mon avenir. ठीक है? या फिर what did you say? pour ma deuxième carrière. हाँ, ये deuxième carrière ना ऐसे हम use नहीं करते, ठीक है? Don't use this expression. I mean, this is very vague. मतलब ये direct English to French translation है, okay? Donc on ne fait pas mot à mot traduction jamais. Second career क्या होता है? First career क्या है? Third क्या होगा? You know, this is sort of a vague this thing. You can say pour ma vie professionnelle. आप ऐसे ही बोल सकते हो कुछ. अब वो थर्ड हो, सेकंड हो, फिफ्थ हो, 10th हो, उससे हमें मतलब नहीं है ना, और हमको है ना, you have to be, so you have to use this thing. ठीक है? So अच्छा, यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है, okay, so c'est utile, ce sera utile pour ma vie professionnelle, c'est tout. Professional life, personal life. ठीक है? अच्छा, here you said j'ai réalisé que cette langue serait utile. अब वो j'ai réalisé is a wrong verb. Réaliser doesn't mean to realize. Okay. This réaliser means to fulfill. ये वाला जो ये जो फ्रेंच में réaliser है, ça veut dire to fulfill, मतलब to like ऐसे इंग्लिश में भी बोलते हैं ना कि I realized my dream, long dream today. Realized मतलब वो I fulfilled my dream. But जो आप ये बोल रहे हो that I realized, this is rendre compte. वही se rendre compte. So I realized that this long would be useful for my professional life. So je me suis rendu compte que cette langue serait utile pour ma vie professionnelle. So, je me suis rendu compte. ठीक है? और आप फेमिनिन हैं तो आपको il faut ajouter a. यार हंसा के रहा पागल. सॉरी, म्यूट भी नहीं किया है.
My brother is there anyway. Okay. So, je me suis rendu compte. ठीक है? So, avec rendu. ठीक है? So, आपने बोला I realized that this language, donc, je me suis rendu compte que cette langue serait utile pour ma vie professionnelle. Don't use deuxième carrière, troisième carrière, non. Ok, ça semble vague. ठीक है? Oui, merci. Ok, désolé. Ok. Ok, pas grave, merci beaucoup. Oui, anybody else? Oui, qui va parler? So this is more of speaking plus, adding some. So basically, what I'm trying to add here that what you're trying to say. So क्या होता है कि जब हम A1, A2 कोई भी level करते हैं ना, तो हमको जो introduction याद होती है शुरू से, तो हम वही बोलते आते हैं पूरे time. हमको ये नहीं करना है. Il faut toujours améliorer le niveau. ठीक है? So by each passing day, every week, try to add few words in your vocabulary list. Try to improve. है ना? अगर आप कुछ gardening कर रहे हो, आपको लग रहा है मेरे को gardening, so add it in your introduction. Les week-ends, je fais du jardinage avec mon père. Le week-end, etc. मतलब you can talk about yourself. है ना? In detail. Okay, any question? Anybody else wants to speak something? Oui? Anybody wants to speak? Je m'appelle Caroline. Je suis indienne. J'habite à Chennai. Je suis spécialiste du service clientèle. Spécialiste du service clientèle. Spécialiste du service Spécialiste. Spécialiste हाँ. du service clientèle. Du service. Service नहीं होता है, वो English लोग आ रहा है ना. So du service. Du service clientèle depuis 3 ans. J'aimerais devenir traductrice de français. Traductrice de français. Language बोल रहे हो. आपने you are feminine, so tu veux devenir traductrice. But translator of French language. So French as a global, as a whole, cela reste masculin. Traductrice de français. हाँ. J'aime voyager, cuisiner. Aussi, j'aime jouer avec mon chien. Mon chien. Mon chien. If it is feminine, I mean, if it is a bitch, then you can say ma chien. Mon chien. Ok, alors pourquoi tu apprends cette langue, la langue française? Pourquoi tu apprends cette langue? J'aimerais devenir traductrice de français. Oh, ok. Aussi, cette langue, ça me plaît beaucoup. Ok, oui, très bien. Je suis active, sensible et aussi patient. Ok, qu'est-ce que ça veut dire? What did you say? Je suis active. Sensible, responsable et aussi patient. Quel orthographe? Patient, I didn't get what is it? Patient. Oh, Comment dire? Okay, patient like you. Oui, madame. You have that tolerance power, है ना? वो वाला Oui, madame. है ना? Okay, so here two adjectives, I would say no to them. Je suis active, c'est correct. Je suis responsable. C'est aussi, okay, ça marche. Okay, I'm responsible.
ça marche, but we do not say responsable, but ठीक है. But sensible, what do you mean by this sensible? What do you want to say, like My personality trait. sensible, Oui, madame. like, but in French ça c'est faux ami. Sensible doesn't mean sensible, sensible means sensitive. D'accord, madame. ठीक है, so sensible means sensitive. If you want to say I'm sensible, donc il faut le dire d'une autre manière. J'ai du sens, c'est tout. ठीक है, sensible, we or you can say like sensible, like you can say raisonnable, that is also correct, raisonnable. ठीक है, D'accord, madame. but not. And this what was the last one? Patient. Patient doesn't exist in French. On peut dire et j'ai trop de patience. Patience. D'accord, ये madame. वो वाला patient ये नहीं है, ठीक है. D'accord, madame. So et moi je possède ou j'ai trop de patience, ठीक है. D'accord, madame. Ok, très bien. So sensible c'est faux amis, patienceuse faux amis. Ok, ok, bravo, merci. ठीक है, so we many of you participated, so this was we wanted to improve more on speaking, but some extra advice or tips which are useful for you, so we can just look at the other way of introducing, maybe not other way, but how do you introduce Okay, so when I say parlez-moi de vous, donc आप लोगों ने I think कुछ ऐसा ही बोला है, when you have talked in length, very good. So when I say parlez-moi de vous, présentez-vous, on peut dire je m'appelle etc. your name, je suis une étudiante en économie, so I am a student in, we are talking about the domain or the subject. So instead of just saying je suis étudiante, you can say I am a student in the field of or in this subject. En économie à l'université de Paris, etc. J'ai 25 ans et je suis née à Marseille. If you want to talk about this, that I am, instead of saying j'habite à Delhi, you can say je suis née à Delhi. ठीक है. Actuellement, j'habite dans un appartement. ये भी आपके इंट्रोडक्शन में आ सकता है. जरूरी नहीं है कि आपको ये बनना है या ये करना है, तो ये वही इंट्रोडक्शन में. You can also talk in general. Actuellement, j'habite dans un appartement en colocation avec 2 amis. This is also you're talking about yourself. Hein? Mes passions incluent, instead of saying j'aime, जो ये बहुत हम यूज करते हैं, j'aime lire, j'aime écouter la musique. So, au lieu de dire j'aime faire etc., on peut dire mes passions incluent. Include is the verb to include. Inclure, RE ending verb है. Mes passions incluent la lecture. अब instead of using the verb form, la forme verbale, on utilise la forme nominale. ठीक है? So, if you will say the same thing this way, you definitely are getting points. Mes passions incluent la lecture, le cinéma et la danse contemporaine. आपने add कर दिया एक adjective. You just, instead of simply saying j'aime danser, अब वो j'aime danser और इस लाइन में बहुत फर्क है. J'aime regarder les films et danser, या j'aime lire le journal, किसी ने बोला था, वो lire और regarder और danser से अच्छा ये हो गया ना. La forme nominale, la lecture, le cinéma et la danse contemporaine, la danse moderne, la danse jazz, la danse classique, कुछ भी बोल सकते हैं. ठीक है. J'ai également un chat nommé Léo. Également. So we've added one adverb. ठीक है. तो हमको क्या करना होता है, जो हमारी चीजें सिंपल होती हैं उनको
कॉम्प्लिकेट नहीं बोलूंगी, बट उनको सिंप्लीफाइड वर्जन से बेहतर वर्जन में लाना है, मतलब दिस इज व्हाट द आइडिया इज। अभी जैसे बोल रहा है ऊ अभी तेवू, अभी इंस्टेड ऑफ सेइंग कि ऊ अभी जाबी तलियों खत्म, ऐसे जरूरी नहीं है आप इतना बोलो। आइल्स में तो थोड़ा वो टाइम देते हैं आपको, आप एक्स्ट्रा बोलते हो। सिमिलरली इन फ्रेंच, और ये TCF में होता है, टेफ कनाडा में वी डू नॉट टेक योर इंट्रोडक्शन, TCF कनाडा और ऑफ कोर्स डेल्फ में होता ही है। So, j'habite à Lyon, une ville magnifique située dans la région Auvergne-Rhône-Alpes। कुछ भी आप, कुछ अगर ज्योग्राफी पता है अपनी सिटी की, और लेट्स से आई लिव इन दिल्ली एंड दिल्ली इज फेमस फॉर इट्स स्ट्रीट फूड, तो ये मैं ऐड कर सकती हूँ। j'habite à Delhi et c'est une ville célèbre pour sa street food. I can say this. Mon appartement se trouve près du parc de la Tête d'Or, ce qui est génial pour les balades, which is very good for the walk. Quel âge avez-vous? J'ai 30 ans et je trouve que chaque année apporte de nouvelles expériences et de nouvelles leçons. English में तो हम हमेशा हर साल में वो लेते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, रेजोल्यूशन। तो उसी रेजोल्यूशन को हमने दूसरे वे में अपनी एज के साथ ऐड कर दिया। आई मीन वी आर बीइंग क्रिएटिव विद द लैंग्वेज से, है ना। आई थिंक दैट एवरी ईयर ब्रिंग्स न्यू एक्सपीरियंसेस एंड न्यू लेसन्स टू मी। सो आई मीन ऐसा नहीं है कि इस सेंटेंस को बोलने के लिए आपने 20 सेकेंड्स ले लिए या 30 सेकेंड्स ले लिए, मतलब ये सब आप इतना लंबा तभी बोल सकते हैं continua la fluidité de la langue, मतलब it has to be जल्दी। Okay, merci Caroline. और पूजा who did this? Okay, पूजा. So j'ai 30 ans. ठीक है, je trouve que chaque année apporte de nouvelles expériences et de nouvelles leçons pour moi. मतलब इतनी जल्दी होना चाहिए तो ही, you know, you can be with the time. D'accord. Okay, so this was it. I mean, for today, the interaction thing. So before just ending, nobody actually gave the feedback about this thing. So, I mean, you should actually take out time for the efforts I have taken for you to speak, or I have added many more things which wasn't included in the spoken thing. That's fine. So just at the end, I would like to give you some suggestions how you can improve your this thing, है ना, French level, और कैसे आपको अपनी लैंग्वेज को करना चाहिए, पढ़ना, मतलब how can you know come from one level to another level. So first of course is lire régulièrement, reading regularly करना है, consacrer du temps chaque jour à la lecture en français, commencer avec des textes simples et progresser vers des niveaux plus avancés au fur et à mesure que vous gagnez en confiance. What is it? We are saying that you have to just start reading every day. Okay, from simple texts and progress to higher texts, है ना? And slowly and gradually, au fur et à mesure, you will have the confidence. अच्छा, ये 1 हो गया point. Anyway, choisissez le bon matériel. Of course, you have to choose a good material. ऐसा नहीं है कि, एक तो one thing I want to add कि, you know, just do not surf internet looking for this book, that book, downloading, etc. एक book को अच्छे से कर लो, that's fine. I mean, don't कि एक नई book आई है उसने, don't do that. वो फिर it will really hamper your learning. Take one good book, good, यहीं पे लिखा है ना, le bon matériel, ऐसा कुछ भी नहीं लेना. Take a good book, follow that book with your heart and soul. Underline your words, underline the expressions, look for the meaning in the dictionary, write the meaning, and make a target that every day I have to learn 2 words minimum. 3 कर सकते हो, अच्छी बात है. 2 French words. So अब वो French words में कुछ भी आ सकता है, adverb आ सकता है, एक noun आ सकता है, एक adjective आ सकता है, एक verb आ सकता है, कुछ भी word आ सकता है, ठीक है. This you have to. और इसमें हम बोल रहे हैं कि आप कुछ कॉमिक बुक्स ले सकते हैं, कुछ भी, you know, you can choose any material. Prenez des notes. Of course, आपको notes तो बनाने ही पड़ेंगे. Online आजकल हो चुका है, so il y a un peu inconvénient aussi.
que online, je peux pas vous voir si vous écrivez ou non. Donc, moi, je vous suggère de faire des notes. Il faut toujours écrire. ठीक है, without just looking at the screen and not making the notes is a big problem. I mean, you cannot learn the language. Fourth point, I would say, pratiquer la lecture à voix haute. ये तो सबसे important है. This I also guide my students. You have to practice the speaking in high voice, मतलब in front of the mirror. अपने आप से बात करो. Okay, talk to yourself when you're in kitchen, when you're in bathroom, maybe taking bath or maybe taking a shower. Just talk to yourself in French. When you can say that je me douche, maintenant je suis dans la salle de bain. You can talk about the present. You can think कि कल क्या हुआ था. जो चीज आप कल हिंदी में सोच रहे होते हो, अकेले में माइंड चलता है जब किचन में कुछ खाना बना रहे होते हो. तो आप you know, I mean, when I also अभी भी मैं करती हूँ, being a teacher, I mean, when I'm preparing food for my husband also, तो quand je suis dans la cuisine और c'est moi aussi je me parle en français. ठीक है, मैं भी बात करती हूँ अभी भी, because so you have to talk to yourself. और जब भी तेज आवाज में कब बोलोगे, जब आप शीशे के सामने, जैसे मैंने आपको बोला, il faut pratiquer la lettre R. तो शीशे के सामने खड़े होकर अपनी शक्ल देखो, कैसा मेरा मुंह बन रहा है. यूट्यूब खोलो, यूट्यूब पे सुनो, अच्छा ऐसे हो रहा है, फिर शीशे के सामने देखो, ऐसे you know, you should do like this. रूम को लॉक करके, I mean, you can do this. Then you have identifier le contexte. Essayez de comprendre le sens général d'un texte en vous appuyant sur le contexte global et sur les mots-clés que vous connaissez. So again, try to, we are not saying whenever we do the comprehensions in French, हम आपको नहीं बोल रहे हैं आप एक एक वर्ड का मीनिंग समझो, ठीक है. आपको एक एक वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आएगा. B1 भी कर लोगे, B2 भी कर लोगे, होता है कि नहीं आता. इवन लिसनिंग में you cannot understand each and every word, but you must train your mind to understand the whole context. मतलब you have to close your eyes if listening. Imagine that scenery, that situation happening, उसको imagine करना है. Similarly, comprehension में read this, the whole thing, and then get to a context. ठीक है. Faites attention à la grammaire et la syntaxe. Obviously, to my B1 students, they know, जब भी मैं उनको पढ़ाती हूँ क्लास में, तो मैं हमेशा बोलती हूँ, it's not about just doing fill in the blanks. It's not about reading the comprehensions and ticking the correct answers. मेरे को वो चाहिए ही नहीं. I want you to analyze the text while reading. Underline the expressions. ये देखो, ये वर्ड यहाँ पे क्यों लगा है, ये मैस्कुलिन में क्यों है, ये फेमिनिन में क्यों है, ये सेंटेंस ऐसे क्यों बना है, ये कौन सा एक्सप्रेशन है, ये कौन सा स्ट्रक्चर है. क्वेश्चन योरसेल्फ. एंड अब आप अपने आप को क्वेश्चन करोगे तो आंसर्स भी आपको मिल ही जाएंगे. ठीक है. सो देन यूटिलाइज़ez des ressources en ligne. अब ये des ressources यहाँ पे थोड़ा, again I'm saying कि I'm not in a favor of downloading or having lot of material. I am in a favor of pursuing just following 1 or 2 books maximum for a better level in French. ठीक है. हाँ, अब आप इसमें क्या हो सकता है, सी वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, तो आजकल vous avez des applications comme Duolingo, Italki, etc. आपको लगता है आपकी प्रोग्रेस हो रही है, देन कंटिन्यू. लीजिए différents types de textes, différents types de textes. अब एक ही नहीं है कि बॉन्द डेजी ने ले लिया है तो हम कार्टून वाला ही पढ़े जा रहे हैं, है ना. तो आपको न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, आपको ब्लॉग्स पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज एवरी टेक्स्ट हैज अ डिफरेंट वे ऑफ प्रेजेंटिंग द आइडिया. Donc, when you will read the journal, you will be reading the incidents or the events in past tense. अलग तरह से प्रेजेंट होता है. ब्लॉग्स में एक कैजुअल इनफॉर्मल लैंग्वेज यूज होती है, जर्नल में फॉर्मल लैंग्वेज यूज होती है, लेज एसेज में एक टॉपिक के ऊपर हम बात करते हैं. ठीक है. Pour vous familiariser avec différents styles d'écriture. This is the goal.
ठीक है? So you have to adapt yourself with the different types of the write up and how we write. ठीक है? ये सारे वो हैं, आपको कैसे करना है. Then pratiquer la patience. Of course, patience is the key to success. Lire en français peut être difficile en début, mais ne vous découragez pas. Soyez persévérants et continuez à pratiquer. So do not lose hope. Practice each day and definitely you will progress. Last, discutez de ce que vous avez lu. Partagez vos lectures avec des amis francophones. So if you do not have des amis francophones, again, मैंने ये कल भी बोला था, il faut trouver un partenaire pour améliorer le niveau de la langue. So अकेले learning एक stage तक होती है, and this is very true. कोई सोचता है A1 A2 कर लेते हैं, अब हम B1 खुद ही कर लेंगे. उनको 2 साल हो जाता है, उनका B1 नहीं होता है. So you need someone. ठीक है? So find a partner जो आपका A2 में आपकी fellow mates रहे हैं या A1 में रहे हैं. Try to be friends and try to be in contact. ठीक है? क्लब de lecture आजकल फेसबुक इन सब पे होता है, बट मुझे नहीं लगता है कि कुछ इफेक्टिव वहाँ पे होता है. मीन इफेक्टिव तभी होता है जब आप किसी से बात करते हो, मीन है ना, या क्लोज फ्रेंड या कोई भी, और इफ यू आर enrolled in a class or something, so you have to, or also if you're joining any online classes, you have to speak in the class. This is also one way of improving. आजकल ये भी है ना, कैमरा सबके ऑफ हैं, सब म्यूट करके बैठे हैं, आप बात नहीं करो, तो यू हैव इन्वेस्टेड योर मनी एंड टाइम, सो यूज इट. बस these were the things. So बस this was it. N'oubliez pas que la clé de la maîtrise de la lecture en français est la pratique régulière et la persévérance. This again, so it is la pratique régulière. ठीक है? And the perseverance you have to keep. Et bonne lecture. ठीक है? Any questions? Si vous avez des questions, vous pouvez me poser. Sinon, on peut s'arrêter ici. Anything you want to ask? Anything you want to ask? Est-ce que vous avez des questions?